Hello everyone, I am Chitra. Today in this video, we are going to start a new topic that is hardware and software. Before starting the topic, you should know what is computer. Computer is an amazing machine that can do different kinds of tasks. कंप्यूटर एक अमेजिंग मशीन है जो कई तरह के कामों को करती है. Now we are going to discuss about parts of computer system. There are two types of computer system, hardware, software. We will discuss about these one by one. First one is hardware. Let me tell you one example to make you understand about hardware. As we know that our human body is made of different parts. Some outer parts are visible like lips, nose, eyes, ears. These parts are visible, but some inner parts are not visible like brain, lungs, heart. These parts are not visible. Similarly, computer is also made of different parts like keyboard, mouse, hard disk. These are hardware devices. Some outer part of hardware devices are visible like keyboard, mouse. These are visible. But some inner parts of computer, some inner parts of hardware devices are not visible like hard disk. देखो, अगर आप CPU ओपन करोगे तभी हार्ड डिस्क देख पाओगे. Now I am going to discuss about types of computer hardware. Do you know how many types of computer hardware there are? There are three types of computer hardware: input devices, output devices, storage devices. Now I am going to discuss about input devices. Do you know the example of input devices? Keyboard, mouse, scanner. These are input devices. Suppose you want to type your name on a computer. मान लीजिए आप अपना नाम कंप्यूटर में टाइप करना चाहते हो. Then which input device is used? Keyboard. And suppose you want to make a picture, you want to make a drawing on a computer, then which input device is used? मान लीजिए आप कंप्यूटर पे कोई ड्राइंग बनाना चाहते हो, कोई पिक्चर क्रिएट करना चाहते हो, तो आप किस इनपुट डिवाइस का यूज करोगे? माउस. And next one is a scanner. By using a scanner, you can scan any picture, any images and book of your pages, and you can also save it on a computer. स्कैनर का यूज कर आप किसी पिक्चर को स्कैन कर सकते हो, आप अपने बुक के पेजेस को स्कैन कर सकते हो और उसे कंप्यूटर में फीड कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो. इट इज इनपुट डिवाइस. Now I am going to discuss about second type of hardware, computer hardware, that is output devices. Do you know what are output devices? Monitor, printer, speaker. These are output devices. Whatever you do on a computer, it will be visible on monitor. आप कंप्यूटर पे जो भी वर्क करते हो वो कहाँ विजिबल होता है? मॉनिटर पर. It is output device. By using printer, you can print anything that is visible on monitor on a paper. प्रिंटर का यूज कर मॉनिटर पे जो भी आप देखते हो उसे प्रिंट कर सकते हो एक पेपर पर. It is output device. Next one is a speaker. By using a speaker, you can listen music and get sound from the computer. स्पीकर से आप कोई आवाज या म्यूजिक सुन सकते हो. इट इज आउटपुट डिवाइस. ओके. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट थर्ड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, दैट इज स्टोरेज डिवाइसेस.
Storage devices are used to store data or information. स्टोरेज डिवाइसेस का यूज कर हम अपने डेटा को सेव कर सकते हैं, उसे ट्रांसफर कर सकते हैं. डू यू नो व्हाट आर स्टोरेज डिवाइसेस? हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, डीवीडी, सीडी, these are storage devices. First one is hard disk. Hard disk is the main storage device in a computer. Whatever you do on a computer, hard disk store all that work, all your work. आप जो कुछ भी कंप्यूटर पे करते हो उन सारे वर्क को हार्ड डिस्क स्टोर करती है. नेक्स्ट वन इज पेन ड्राइव. इट इज स्मॉल डिवाइस. It is used to store data or information, and you can also transfer data from one computer to another computer. पेन ड्राइव का यूज कर आप डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो, और अगर आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर कराना है तो भी पेन ड्राइव आपको हेल्प करती है. नाउ नेक्स्ट वन इज डीवीडी, सीडी. DVD stands for digital versatile disc and CD stands for compact disc. These devices are shiny devices, and by using these devices you can store your data and information. Okay, now let me tell you one thing, that these devices are input devices and output devices both. Okay, now I am going to tell you about another part of computer system, that is software. What is software? To make hardware run on a computer, we must have software in it. आपका हार्डवेयर तभी वर्क करेगा जब आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर हो. Now I am going to discuss about types of software. System software, application software. We will discuss about these one by one. First one is system software. You should know the actual definition of system software. System software is a set of programs that manages overall working of a computer. कंप्यूटर सिस्टम के ओवरऑल वर्किंग को कौन मैनेज करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर. लेट मी टेल यू वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड सिस्टम सॉफ्टवेयर. हु रन्स योर हाउस? योर पेरेंट्स. आपके घर को आपके पेरेंट्स चलाते हैं. एंड सपोज योर पेरेंट्स आर अवे, आपके पेरेंट्स कहीं बाहर चले गए हैं, then I am sure it will be difficult for you to manage all the household work. ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा कि मैं अब सारे घर के कामों को कैसे करूं, because your parents run your house with a system. Okay, similarly computer has also a set of program that manages all the work of a computer. This is operating system. And these are operating system: Windows 10, Mac operating system, Android. These are system software. Okay. Now I am going to discuss about second type of software, that is application software. By using application software, we can do different kinds of job on a computer. Application software का use कर हम कोई भी पार्टिकुलर टास्क कंप्यूटर पे कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल MS Office, games, Paint. These application software allow us to make drawing on a computer, for making notes, calculations, and so on. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज कर हम कंप्यूटर पे ड्राइंग बना सकते हैं, नोट्स तैयार कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, और भी कई तरह के कामों को कर सकते हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें इन सारे कामों को करने में मदद करती है. ओके, नाउ दैट इज
all about hardware and software. What you have learned in this video, you have learned what is hardware, types of hardware, that is input devices, output devices, storage devices. After that, we have discussed about what is software, types of software, that is system software, application software. Now that is all about hardware and software. Hope this video is very informative for you. Do learn it and revise it.